Good morning to all of the students. Today we will continue the next topic of the health and diseases. Now, today we will discuss about the AIDS. AIDS means acquired immune deficiency syndromes. This disease caused by the HIV viruses. These diseases are caused by the HIV viruses. Here the immune system of the body are totally weak. Every time the person are getting certain type of the diseases. हर बार बंदे को कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, द पर्सन्स आर गेटिंग समथिंग, वी कैन से एवरी टाइम द पर्सन आर गेटिंग, ना पर्सन को हर बार कुछ ना कुछ डिजीजेस होती ही रहेगी एड्स के केसेस में, अगर वो HIV इन्फेक्टेड है तो. ना हाउ यू कैन गेट, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द पर्सन एज एन एड्स और नॉट. वी हैव टू डू इन दिस केस एलिसा टेस्ट. यहाँ पे एलिसा टेस्ट करने पड़ता है. वी हैव टू डू द एलिसा टेस्ट. विद द हेल्प ऑफ द एलिसा टेस्ट you will come to know whether the person has a AIDS or no. Now what kind of the symptoms are there? There are specific symptoms are there. Now remember something, always remember whatever the AIDS persons, with the help, we can say, when you are eating the foods with the AIDS persons you cannot get the AIDS. By touching the AIDS persons also you cannot get the AIDS. Remember, we have to behave normal with the AIDS persons. The HIV viruses, the person should be, our behavior should with the HIV person, it should be a normal. Now you will get the AIDS by sexual contact of the HIV, we can say the infected persons of the AIDS, or by the contact with the blood test of the blood contact of the AIDS persons. Here, do you remember? Just see, they given HIV was first reported in the African species of the monkey. The African species of monkey was there. In this monkey they reported, means they found the AIDS viruses. According to National AIDS, they are telling control programs and the un-AIDS, that was 80 to 85% HIV infection patients in India is there. Maximum percent of the HIV viruses we will get, maximum persons of the HIV viruses or AIDS peoples, it was in India. They are telling 80 to 85% AIDS, we can say HIV persons virus is there in our India. Now rabies are there. Rabies means whenever the, we can say, animals are cutting, means the animal bite. It can be the rats are there, monkeys are there, dogs are there, cat are there. Whenever they are by the bite of these animals you will get the rabies. Now virus are entering directly to the ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स. जो वायरस बोलता है ना, जो कटिंग के बोलते हैं ना एनिमल के बाइट पे, जो वायरस एंटर होता है डायरेक्टली उन लोग के ब्रेन पे अफेक्ट करता है. तो इन दिस केस द पर्सन आर फियरिंग मोर फ्रॉम द वाटर. यहाँ पे इंसान बोलता है ना, जो पर्सन्स रहता है ना वो डरता बहुत है वाटर से. दैट वी आर टेलिंग हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया से पता चल जाएगा, मीन्स अगर पर्सन्स को एनिमल बाइट हुई है और अगर पर्सन्स वाटर से अफ्रेड हो रहा है तो the person has a rabies in this case. Here the person will fear with the more and more water. person बोलता है ना, person एकदम fear करेगा because the water it cannot be enter through the throat of the water persons. Rabies is a fatal disease. You can prevent it easily. The symptoms of this rabies you can get from 90 to 175 days of the dog bite. अगर dog bite किया है और cut हुआ है तुम्हारे body में, if the dog bite is there or cut is there, so from 90 to 175 days you will come to know you have a rabies. Now symptoms of the rabies, you have a 2 to 12 week fever will be there. The person has a 2 to 12 week fevers or exaggerations in behaviors. मतलब एकदम बंदा बोलता है ना, the persons will totally cause to appear more and more angerness will show. And the third one is hydrophobia. As I told you, the person will afraid or feared from the water. Now infectious disease, I already told you, the person has an infection, then they are getting. Now the non-infectious disease. Non-infectious disease means the persons, they are telling the disease which do not occur through infections. Here this kind of the disease, we can say without the help of the infection, without infections, without infection of the or the body contact, this disease will be that we are telling as a non-infectious disease. They already told disease which do not occur through infection, without infection or without body contact, without
इन्फेक्शंस दे आर टेलिंग, बिना इन्फेक्शन के और बोल रहा बिना बॉडी कॉन्टैक्ट के जो डिजीज़ होती है उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं. यह सर्टन्स ह्यूमन हिमसेल्फ वी कैन से, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जैसे कि कैंसर्स. कैंसर्स क्या होता है? यर अनकंट्रोलेबल सेल आर देयर, जो ब्लड सेल होते हैं जो अनकंट्रोलेबल, मोर एंड मोर ब्लड सेल विल बी इंक्रीजेस इन दिस केसेस. द ग्रोथ ऑफ सेल विल इंक्रीज मोर एंड मोर द ब्लड सेल्स. और द ग्रुप ऑफ द कैंसरियस सेल, जो कैंसरस के ग्रुप सेल होते हैं ना उसको मैलिगेंट ट्यूमर बोलते हैं. यर द कैंसर है, इफ द पर्सन हैज़ अ कैंसर तो दे हैव अ सर्टन टाइप ऑफ द ट्यूमर that we are telling as a malignant tumor. Now this tumor it can be anywhere. It can be in a stomach, breast, tongue, uterus, skin, tissue in like bloods. ऐसा बता रहा है. जो कैंसर कहाँ पे भी हो सकता है या कैंसर के ट्यूमर कहाँ पे भी हो सकते हैं. Yeah, reason why you are getting cancers? There are some reasons are there. The person are eating more gutka, tobacco, smoking, alcoholism are there, और lack of fiber content. लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, जो फाइब्रिक फूड ज़्यादा खाते हैं, जो कच्चे कच्चे फूड ज़्यादा खाते हैं, फाइबर्स दैट इज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल टाइप इन फूड्स. नाउ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द पिज़्ज़ा, जंक फूड दैट इज़ पिज़्ज़ा इज़ देयर, बर्गर आर देयर. इफ द पर्सन ईटिंग दिस काइंड ऑफ द more foods are there or more oily kind of the foods are there, then they also has the chance of the cancerous. Now some of the many possibility are there. There are some other reasons are there. Heredity may also be a reason. Heredity means we can say if the person in the family, if the one of the person has a cancer, so it might be in the future or it might be any person in the relative can also be happen. बोलते हैं ना, अगर कोई बंदे को, बोलते हैं ना कोई पर्सन्स को, कोई फैमिली को, इसके रिलेटिव को, ग्रैंडफादर को या फादर को, तो हो सकता है. इट माइट बी, बोलते ना तुम्हारे या तुम्हारे बच्चों को भी कैंसर हो सकता है. ये हेरिडेटरी हो जाए, मतलब अगर किसी एक को है तो हो सकता है दूसरे को भी हो सकता है. सिम्टम्स, इन दिस सिम्टम्स दे आर टेलिंग क्रॉनिक कफ, कफ एकदम ज़्यादा रहेगा. होर्स वॉइस मीन्स द वॉइस इज़ लाइक मोर एंड मोर लाउडर. एंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, द पर्सन कान ईट प्रॉपरली, खाना खाने में भारी पड़ेगा. द पर्सन्स कैन नॉट ईट फूड प्रॉपरली. इनक्योरेबल स्कार, स्कार मतलब क्या बोलेंगे, नेचुरल पार्ट, जो हीलिंग प्रोसेस रहेगा ना. अगर कुछ इफ़ द पर्सन हैज़ अ सम काइंड ऑफ द कट आर देयर, तो वो जल्दी क्योर नहीं होगा. हीलिंग पार्ट बोलेंगे, कुछ कट बिट जाएगा तो. एंड इन्फ्लेमेशंस द इम्यून सिस्टम, यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम रहेगी ना पर्सन की एकदम वीक हो जाएगी और एकदम हार्मफुल हो जाएगा. मतलब पर्सनस को ज़्यादातर किसी न किसी तरह के डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं. मतलब हर बार पर्सन डिजीज़ में ही रहेगा. नाउ लम्स इन द ब्रिस्ट यू नो वेरी वेल इन द केस ऑफ द वुमेन, तो यह लम्स ब्रिस्ट विल बी मोर एंड मोर पेन. इट इज़ लाइक एन रबरी टाइप. नाउ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस्ट means the weight loss will be more and more every time. The weight loss will be there in the person case of the cancer. Nowadays modern diagnostics of the cancer treatment are there. The cancer can be curable also in the first stage or second stage, but in the third stage it cannot be curable. But nowadays you will observe there are a lot of the treatment are there. There are a lot of the treatment are there. With the help of the treatment the person can be curable. So nowadays you just see there various techniques are there, that is CT scan, MRI scan, mammography, biopsy are used for the diagnosis of the cancers. जो MRI हो गया, CT scan हो गया, mammography हो गया, biopsy हो गया, ये सब से diagnosis करते cancers के. यहाँ पे look in this case they are telling along with the that is chemotherapy. With the help of the chemotherapy the cancer treatment can be prevented. In this chemotherapy we can say lot for the full बॉडी हेयर विल बी लॉसेस. तुम लोग को पता है कि बहुत से लोग होते हैं ना जो हायर सोसाइटी वालों का, जैसे कि युवराज सिंह था, द लॉट ऑफ दी हायर सोसाइटी पर्सन्स दे आर डूइंग दिस कीमोथेरेपी, और इट कैन बी अ लिटिल बिट कॉस्टली ऑल्सो. बट इन दिस थेरेपी द फुल बॉडी हेयर विल बी लॉस. एंड रेडिएशन थेरेपी इज ऑल्सो देयर एंड सर्जिकल थेरेपी आर ऑल्सो देयर. Surgical theory is there. Surgical theory for the tumors they are using. Now modern technique like robotic is there. Robotic technique is also there. With the help of the robotic they are doing also surgery. And laparoscopic surgery. In laparoscopic surgery we can see the persons are making more and more small cut where the tumor is there in the body. हम लोग बहुत से स्मॉल कट करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में. Now you just see the chart. Always remember control diet will be there.
for the types of the cancers. Physical exercise is there. In modern exercise, or we can say in modern treatment is more beneficial to cure the cancers. If you want to cure the cancers, modern treatment is that you have to do a physical exercise in day-to-day life, and you have to prevent more and more. Prevention of the food is also necessary, and you have to avoid addiction like tobacco and chewing, smoking, or even alcoholism also we have to avoid it. Now, just see, can you tell, do you remember any person drinking the sugar-free tea or avoid consumption of the sweets? We have seen now in day-to-day life in our surrounding also, lot of the peoples are not eating more and more sweets foods. They are avoiding to drink sugar also, drinking sugar, water. They are not drinking a more sweets water, we can say more sweety type of the foods also, and they are also avoiding the alcoholism also, and drinking sweet drinks also they are also avoiding. They are not eating the sweet type of the foods also. What may be the reason? What this kind of the reasons are there? So in this case the person has a diabetes are there. Okay, we will continue in the next lecture this thing.